So let me share the screen. और हम करेंगे शुरू जाने पर छोड़ा था। तो हमने बात की थी गाउस मैप की और उसके डिफरेंशियल की। आई थिंक वही पे हम थे। तो हमने बात की थी गाउस मैप की और उसके डिफरेंशियल की एज अ लीनियर ऑपरेटर। The differential of a differential map is a linear operator on the increments. हम देते हैं net derivative में ना, when we want to find the derivative of a point at a point. So now I've got this. So T and P जो है मेरा, it is a differential operator from R2 to R2, or it acts on the increments upon those pair of real numbers in R2, and R2 are basically the tangent plane. So which is generated by R sub U and R sub V. Anyway, let me have first a surface patch, and I have a tangent plane, and there is this point, and this is inside my ambient space X, Y, Z. इतना अच्छा नहीं बना, प्लेन जैसा नहीं बना. Okay, anyways, तो यहाँ पे ये एक्ट करता है इस प्लेन में. When I have got UV here, a small tiny change, और मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा. So हालांकि बिल्कुल tiny change है ना, जब मैं कह रहा हूँ DUTV, for a very small change, then this acts via a matrix. There is a matrix given by a, उस matrix की कुछ properties है, यानी this is equivalent, इसके corresponding to the bases RU, RV. Of course, the matrix is always corresponding to some basis. When I associate the matrix to a linear operator, a linear functional, so I presume there is a basis. And in our case, I assume that the basis are RU, RV, which is natural in my tangent plane. So I've got some RU, some RV in this direction. So with respect to this basis, D and P is given by this matrix, which is Fm minus GL, Fn minus GM, और यहाँ पे होगा तीसरी एंट्री FL minus EN, and of course Fn minus EN. So ये वाली जो matrix है, this is the matrix of this differential of a Gauss map. Gauss map is which associates a point on the surface to its unit normal. So that's what I have. Now, so DNP is a linear operator, उसके corresponding matrix भी है. Now, एक theorem हम करेंगे that Gauss map is self-adjoint, a differential of a Gauss map. So let S be a regular surface in R3, then the differential of a Gauss map dNP, which basically acts on the tangent space of the tangent plane to S to TPS, is a self-adjoint linear map. Self-adjoint linear map. Okay. तो सेल्फ एडजॉइंट लीनियर मैप बेसिकली, लीनियर तो ऑब्वियसली पता है, हमने तो उसकी मैट्रिक्स भी निकाली, और डिफरेंशियल इज ऑब्वियसली लीनियर मैप. द क्वेश्चन इज ये सेल्फ एडजॉइंट क्या है.
तो प्रूफ करने से पहले हम लेंगे सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट मैप होता है इन आर एन। अगर मुझे आर एन टू आर एन एक सेल्फ एडजॉइंट मैप लेना है, सो टी अगर है लीनियर मैप तो टी को हम कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट इफ टी एक्स डॉट प्रोडक्ट with y is equal to y, sorry, alter here, x dot product with t of y for all x y belonging to R। लेकिन जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम यूजुअली इनर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी वाई। अगर तुमने फंक्शनल एनालिसिस में देखा होगा, so this is what we mean by the self-adjoint operators. So this is true for all x, we see this is self-adjoint। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब we have to show that DNP applied to some W1 comma W2 is the same thing as W1 inner product DNP inner product W2 applied to W2, because DNP is now T की जगह DNP है, and this is the condition for linearity. Now, okay, now where are these vectors? They are in my tangent plane. They are in TPS, right? For all W1, W2 belong to TP at S in a tangent plane of the surface at the point P। ठीक है, अगर ये मैं दिखा दिया तो इसका मतलब ये सेल्फ एडजॉइंट है। Now what I want to show that, now you have to remember this। अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं अपने प्लेन को, वैसे मैं ऐसे ही बनाता हूँ ताकि शायद ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं हो गया कि नहीं हो गया। Now I have got this W1 is some vector here, है ना, and W2 is some other vector जो भी है यहाँ पे, but I have a basis of this tangent plane। So इसका मतलब W1 can be written some alpha times R sub u plus some beta times R sub v। Now let me call it alpha 1 beta 1, and of course W2 would be some real number times R sub u plus some other real number times R sub। ठीक है, तो so what I want to do, so now what I want you to do as a home assignment वो ये है कि if dn p applied to ru inner product rv is equal to t is equal to ru comma dnp times applied to rv। अगर ये सच है, you just have to use the linearity, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर ये सच है, it implies that dnp at w1 comma w2 is equal to w1 d comma, यहाँ इसका मतलब इनर प्रोडक्ट है, वो जरा ध्यान रखना, dnp applied to w2 for all w1 comma w2 belonging to TPS। यानी इससे ये इम्प्लाई होगा, तो मैंने हिंट दे ही दिया, तुम्हें एज्यूम करना है ये, राइट, दिस इज ट्रू, और प्रूव करना है ये। अब प्रूव कैसे करोगे, बिकॉज W1 एंड W2 कैन बी रिटन लाइक दिस, तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे और यूज करोगे DNP भी लीनियर है और इनर प्रोडक्ट भी लीनियर है, तो इनर प्रोडक्ट और इस प्रॉपर्टी की लीनियरिटी यूज करके तुम दिखाओगे कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे मैं थ्योरम में उसको नहीं लिखूंगा, राइट। नाउ ओके, सो ये जरा मैं यहाँ रखता हूँ, मैंने हिंट दे दिया, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है एंड यूजिंग द लिनियरिटी। तो सिंस
DNP यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे that's understood, where this is the dot product जैसा है or another. Okay, now using the linearity, oh चलो मैंने एक भेजा है किया, since DNP is linear, जो हम पहले ही मतलब that's understood, that's known, and inner product is linear, also linear. It suffices to show that DNP applied to RU, RV is equal to R sub U DNP R. So we have to show star, that would be sufficient. Now consider a curve on our surface. Consider a curve alpha t on the surface S, या जिसका नाम हमें surface S, जिसकी equation है R at RU, right? Such that ये ऐसी curve है alpha dash at 0 is equal to R sub U, right? तो ऐसी कर्व मैंने ऐसा किया, मैंने एक कर्व चूज की जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है यानी 0 पे, या t का वैल्यू मैं 0 दूंगा, स्टार्टिंग जरूरी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है जब t 0 है, तो t के 0 वैल्यू पे उसका जो टेंजेंट है उस कर्व का वो उसी डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में है आर सभी, ठीक है, इट कैन बी डन. सो अगर मैं ऐसी कर्व लेता हूं, then DNP at RU would be equal to d by dt of n at alpha t evaluated at t equal to 0, because alpha t at 0 is equal to 1. Okay, now what I want to say here, now I know that what is dn. dn is by dt by chain rule is nothing but n sub u into du by dt plus n sub v into dv by dt, and d alpha by dt by chain rule, because alpha t lies on the surface is also r at some ut vt, हम इससे पहले कर चुके हैं, lies on the surface, it must satisfy the equation of the surface, so it would be equal to, किसके बराबर होगा, alpha, it would be dr by dt, which by the chain rule would be r sub u du by dt plus r sub v dv by dt. But so d alpha by dt at t equal to 0 would be equal to, so we know that this is equal to r sub u. ये by our assumption है, कहाँ गया, मैं कहाँ चला गया, हाँ, by our assumption ये है कि alpha dash at 0 is RU. तो अगर मैं यहाँ ये RU लूँ, so it means at t equal to 0, d alpha by dt would be equal to RU. That means du by dt should be 1 and dv by dt should be 0.
It implies that therefore du by dt for this curve should be equal to 1 and dv by dt should be equal to 0, which implies that dn by dt dn by dt okay, which gives me, अरे यार ये बीच में ये पेज पता नहीं कहां से घुस गया. dn by dt is n sub u du by dt. So basically it is just n sub u. So you have dn by dt at t equal to 0 is nothing but n sub u. क्योंकि du by dt is 0, dv by dt is, du by dt is 1. So that means d यहाँ पे है dnp at ru would be just n sub u, जो मैं करना चाहता था. So therefore dnp at ru, which is equal to dnp at alpha t d by dt evaluated at t equal to 0 is nothing but n sub u. Similarly, we can prove that by taking a curve जिसका alpha dash at 0 वो बराबर r sub v के, एक और कर्व अगर हमने फिर ये सब करके we will get dnp applied to rv is nothing but n sub v. Okay, so therefore in order to prove star तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है this is equal to this, लेकिन हमने दिखा दिया this would be equal to n sub u and this would be equal to n sub v. So therefore in order to prove star, कहाँ गए ये pages? Oh no. Okay, it suffices to show that nv dot ru, the dot product here is equal to nu dot ru is equal to n sub u dot product with, बचा क्या, मैंने गलत नहीं किया, हाँ ये n sub u rv ru n sub v. N sub, it is sufficient to prove that n sub u rv is equal to r sub u, I think nv. जरा मैं फिर से चेक करता हूँ, और u v और u यहाँ पे था, ठीक है. So let's call it double star. It is sufficient if we put double star for this simple joins. Now, okay. Now n is orthogonal to both r sub u and r sub v, right? So therefore, the dot product of n sub ru must be 0 and dot product of n rv must also be equal to 0. Now differentiating first equation, यानी first equation जो इसमें से है, partially with respect to v, and second equation partially with respect to
u, I should basically get using the product rule because it's dot product basically. पहला वाला मैंने nv ru plus n और पहले को मैंने किया v के साथ तो ru this should be 0 and दूसरी मुझे मिलेगी n sub u r sub v plus n times r vu is equal to 0. Now subtracting, you will get n sub v r sub u minus n sub u r sub v is I could have plus n ruv minus n rvu is equal to 0. Okay. Now using the properties of the inner product, this would be n sub v r sub u. मैंने ठीक किया. Using the properties of the inner product, I think यहाँ चूंकि डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है, but you know फंक्शनल्स में तुम ऐसे करते ही हो, but that is applies to. या simply मैं कह सकता था now क्या ऐसे ये चल रहा करते हैं, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा. Simply ये कहेंगे now r sub uv, because the surface is smooth, so mixed partial derivatives are equal, so therefore this and this cancel out. I get, we get जो हमें चाहिए, that is n sub v r sub u is equal to n sub u r sub v. वैसे में प्रूव क्या करना था सेकंड में, कहाँ गया, सेकंड स्टार मैंने रखा था ना. हाँ, yes, which can be written as, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, and we are done. So that shows that this is a self-adjoint operator. Now we come to the idea of a local isometry. You know, I've got a surface, let's call it S1, another surface patch, let's call it S2. I've got a function from S1 to S2. So when would this function be such that if we take a small arc length here and map it to small arc length here, right? Then the lengths would be preserved. Of course, we would call that isometry. That preserves actually local isometry. Now, before that, we define something called a diffeomorphism. So okay, let चलो पहले मैं diffeomorphism की definition दूंगा और थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा. हो सकता है in case तुम में से कोई ज्यादा उसको पढ़ना चाहे, although it's not क्या होता है, मतलब हमारे सिलेबस में उस तरह का नहीं है. So let S1, S2 be two smooth surfaces. Smooth का मतलब जैसे कि इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स के सारे ऑर्डर कंटिन्यूअस है, मतलब ना जो सरफेस की फंक्शन है. स्मूथ surfaces, then a function f, then a function f from S1 to S2 is said to be a diffeomorphism. Diffeomorphism if f is a bijection and both
F and F inverse, तो बाइजेक्शन है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और स्मूथ यानी उनके सभी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स या पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं. Okay, now if a diffeomorphism, चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन है. A diffeomorphism is called an isometry if it takes, if it preserves the length, if it takes curves in S1 to the curves of same length in S2. तो मैंने बोला एक नेचुरल क्वेश्चन है, जब मैंने कहा f is smooth यानी f and f inverse are differentiable, है ना. But how do we define differentiability from a surface S1 to a surface S2? नहीं, अभी तक तुमने किया differentiability from say R2 to R2, है ना, मतलब R3 to R3. But these are surfaces, these are not the Euclidean spaces. So, but there is a way out. तो वो मैं बताऊंगा बस in case तुम्हें interest हो. So suppose now I have got a surface, right? I've got another surface. तो इसका मतलब, of course, there would be some UV plane, right? So there is some R2 है ये UV plane, और यहाँ पर भी कोई UV plane होगा. So अगर this जो R1 है, R1 maps to मतलब this point here UV, let's call it U prime, V prime, is mapped to some point R at UV. And then this R, of course, there would be some other point here, which accordingly, let's call this surface R1 for the time being, and let's call this surface R2. So there would be some R2 at UVB. Now, हर point इसका इस तरह का होगा, इस surface का इस तरह का होगा. Now I've got a f, which is a function, which sends, say, this point to this point, right? F is a function from this surface S1 to S2, right? Now what I do, I take this map, R2 inverse after F1 after R1. अगर ये जो है ये map, where does it go? So it is पहले R1 मैंने map किया तो मैं यहाँ पहुंचा, नहीं. So this is a map, so let's compose it. So I've got a R2 से मैं जा रहा हूँ R1 के जरिए S1 तक, S1 से S2 में जा रहा हूँ, और S2 से जब मैं ये R2 inverse लगाऊंगा, so this is my R1, this is my F, this is my R2 inverse, right? So R2 inverse would take me back to R2. So इसका मतलब this is basically R2 composition F composition R1, which is a map from R to R2. We say that F is differentiable. F is differentiable at some point UV if this function, this composition is differentiable. Because इसकी differentiability defined है in the multivariate calculus R2 to R2. अगर ये differentiable है तो हम कहते हैं F is a differentiable map from S1 to S2. This is the definition of differentiability from one surface to another. But okay, now ये तो हो गया differentiability का. अब हम कह रहे हैं एक differentiable function जो bisection है और उसका inverse भी differentiable है, तो अगर वो साथ में length को भी preserve करती है, we call it an isometry. अब isometry के regarding हमें एक theorem करना है छोटा सा, वो ये है a diffeomorphism. वो तो assumed है कि ये diffeomorphism है, although उसमें हमें उतना यूज नहीं करना. F from S1 to S2 where
S1 and S2 are of course smooth surfaces. Surfaces is an isometry. Isometry if and only if for any surface patch. यहाँ पे ये पैच का आ गया, बट हम अभी तक पैच पे ही सारा काम कर रहे थे. Sigma 1 of S1 and F composition sigma 1 of S2. Just a minute. ठीक है, क्योंकि उस पर F लगाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे S2 में. राइट, ठीक है. सो अगर ऐसे surface which have the same first fundamental form, यानी EFG सेम है. First fundamental form, यानी मैं जो यहाँ पे एक surface patch लिया था और दूसरा surface patch लिया था, so that this sigma 1 is mapped by F to this sigma 2, which is basically F composition sigma 1. तो अगर यहाँ का जो EFG के वैल्यूज जो हर पॉइंट पे यहाँ मिलेंगे, इस टुकड़े पर भी वही मिलेंगे. EFG के वैल्यू जो हम इवैल्यूएट करेंगे, अगर वो सेम है तो दिस वुड बी एन आइसोमेट्री. फॉर एनी पैच अगर है तो देन इट वुड बी एन आइसोमेट्री फ्रॉम surface to the surface. Proof. Let sigma 2 be equal to F composition sigma 1 be the surface patch on S2, and suppose sigma 1 and sigma 2 has the same first fundamental form. एक वाला साइड तो स्ट्रेट है. Now if T goes, now T being mapped to U at T, V at T, now that would define a curve on the surface, because this would define a curve on the domain. तो वो continuously map होगी to the surface. Is any curve in U the domain of sigma 1 and alpha 1 at T is equal to sigma 1 at UT VT and alpha 2 at T equal to sigma 2 at T. That will be basically sigma 2 at UT VT are the corresponding curves in S1 and S2. Then F takes alpha 1 to in S1 to alpha 2 to S2. So that's straightforward. Then of course, then clearly length of alpha 1 and alpha 2 will be same. Why? Because
lengths are formed by integrating the expressions square root of E u dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square. And we're done. Where E du square plus twice f du dv is the first fundamental form. तुम्हें पता होगा लेंथ आएगा अल्फा डैश t dt उसका इंटीग्रल, लेकिन ये किसके बराबर है? Because alpha dash t का स्क्वायर, no, you just have to use that alpha dash at t is nothing but ru into du by dt plus rv into dv by dt. यानी ये है बेसिकली ru u dot plus rv p dot, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर लेंगे we will get this expression. तो इसको इंटीग्रेट करने से हमें लेंथ मिलती है, और ई एफ जी दोनों जगह सेम है तो लेंथ भी हमें सेम ही मिलेगी. सो देयर इज नथिंग टू, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जरा ये इसके साथ है और ये अलग है. ओके, मुझे लगता है अभी हमारे पास टाइम है 1-2 मिनट टू द कन्वर्स कि फिर से ज्वाइन करें. हेलो, मैं इसको काट रहा हूँ, अभी 1.5 मिनट है, तो कन्वर्स प्रूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं फिर से ज्वाइन होते हैं. हेलो, मेरी सुन रहे हो ना? हेलो, यस सर. ओके, मैं इसको बंद कर रहा हूँ.